हेलो दोस्तों, आज जो है मैं आपको रीडिंग स्किल किस तरह से इम्प्रूव करना है उसके बारे में बताऊंगा। मेरा नाम संजोग है और जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो रीडिंग स्किल है, क्योंकि रीडिंग स्किल में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान किया है कि पहले आपको थोड़ा रीडिंग स्किल के बारे में भी पढ़ा दूँ करके। तो चलिए, आज जो ये स्टोरी है मैंने 8th स्टैंडर्ड की जो है वहाँ से लिया हुआ है। तो इसको जो है मैं रीडिंग स्किल्स किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से वर्डिंग को आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी खुद को ही रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने। तो उस वक्त जो है आपको किस तरह से इसको जब पढ़ेंगे तो सामने वाले को अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो उसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। अगर जितनी क्लैरिटी उसमें रहेंगी उतना ज़्यादा उनको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो करके। तो पहले हम रीडिंग स्किल को देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम बाद में कोई नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। पहले हमको इसको इम्प्रूवमेंट देखना है कि रीडिंग स्किल किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस के ज़रिए ये होता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है अगर आप सच में कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं। तो चलो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। द हाउस बिल्डर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मेसन हु वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। द मेसन ऑलवेज ट्राइड टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन. As soon as a house had been designed by the architect and detail finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. He made sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arches, etc. were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. The owners of the new houses built would be more than satisfied with the construction because of the zeal, diligence, loyalty, and persistence that he displayed in his work. The mason was in great demand and fetched good business to his contractor. Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely with a very good salary. He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Being a firm-minded person, he informed his contractor of his decision to retire from house building. The contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. The mason had made up his mind and refused to carry on. Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site. As a special favor, the mason agreed to do so with great reluctance, not too happily either. The construction started. It was most beautifully designed house to be built at a sought after location. However, the mason could not put his mind and heart in his work. He did his work very roughly and carelessly, without interest or dedication. Even the building material used was of low quality, but he did not care. He simply wanted to complete the job in haste and finally retire. The house was ready earlier than expected. Very roughly made structures, weak walls, poor finish, and did not look as good at all as designed. Yet the mason did not care. He informed the contractor that the house was ready and he was waiting to hand over its key to him. The contractor arrived at the site. He had a file of legal documents in his hand. The mason handed over the new house keys to him, but the contractor did not step forward to enter the house to see it. Instead, with a broad smile, he handed over the file along with the house keys to the mason and said, beaming happy tone, "These are the ownership documents of this new house in your name. The house is yours. I had planned it as gift for you." हो सकता है आपको इसमें जो भी वर्डिंग है जो समझ में नहीं आएंगे तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या हो सकता है कुछ मेरे तरफ से कुछ गलती हो गई होंगी तो आप मुझे वहाँ पे करेक्शन करने के लिए भी बोल सकते हैं। फिर से मैं इसको रेगुलर जो है आपको इसकी इम्प्रूवमेंट किस तरह से की जाती है, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाता है, अलग अलग जो चैप्टर रहेंगे
अलग अलग जो न्यूज़पेपर रहेंगे इसकी जो वर्डिंग्स रहती है वो डिफरेंट रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करके आपके सामने शेयर करते जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।